दादा आपसे सवाल है मेरा कि ये जो टाइटल है फिल्म का, इसमें कितने गुण हैं रानी के अंदर? Before Dada answers the question, Dada went on a diet for this film. So that's a huge thing that Dada has achieved in this movie. Poor thing, he did not eat at all during the making of the film. Dada, no, you can answer. डाइट के बाद ये हाल है. देखिए, मर्दानी इज रानी एंड रानी इज मर्दानी. वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, यू नो, मैं इनको कॉपी किया while doing the character, इनको कॉपी किया, so इसलिए she easily fitted into the role and she did a job which I told her in the morning after seeing the movie finally properly. What a role! It's fantastic, and the spirit has come out. And believe it or not, after this, you'll have so many Mardanis. I wish there's so many Mardanis in our country. बहुत हो गया, बहुत हो गया. डर डर के मरना कैंडल जला के, बहुत हो गया. You have to come out of this thing. The other day I was in Delhi. I was in Delhi and there was this young kid, कुछ पैसा मांग रहा था, वो अपना उससे टोल नाका से. And the driver was saying, let me just give me 5 minutes. मैं आगे जाता हूँ क्योंकि पीछे से हॉर्न दे. फिर guy came and started almost like, क्यों कैसे करेगा, ये करेगा, वो करेगा. I mean, imagine this happening to a girl in a street all alone. What do you do? We are 5 people and we are thinking क्या करेगा, ये तो बहुत अजीब टाइप का बंदा है, गुंडा है, क्या करेगा. Imagine this happening to your daughter. I mean, I was thinking my daughter who is 19, 18. I mean, imagine. This is a time to fight. I don't think it's a film. It's a message, frankly speaking. रानी, जैसे कि आपने कहा कि रानी हियर सेंटर योर लेफ्ट, सॉरी योर राइट, हियर ओह सॉरी आई एम सॉरी. रानी, जैसे आपने कहा कि हर लड़की को मर्दानी होना चाहिए जी. आपने प्रोमो में बहुत सारे लॉ के बारे में बताया, तो आपने लॉ में क्या कुछ सीखा है और एक्शन सीक्वेंस बहुत सारे किया है. तो मैंने क्या सीखा है ये तो इनको पूछना पड़ेगा. ये राइटर है फिल्म के, और जितने लॉ के सेक्शंस मैं बोल रही हूँ, इट्स कर्टसी मिस्टर गोपी. सो गोपी, so Gopi, you want to just like kind of say something because he's asked a question. I would actually be a lawyer if I was not an actress, because I like to argue. So वो तो आईपीसी के ये थे सेक्शन से, वो तो कोर्ट के वहाँ पे उस सिचुएशन में जो कोड ऑफ कंडक्ट जो वायलेट हुआ था वो वहाँ पे कोर्ट किए थे और कुछ नहीं था. एक्शन सीक्वेंस इतने सारे, तो आपने क्या कुछ ट्रेनिंग लिया उसके लिए? हाँ सॉरी, एक्शन सीक्वेंस बहुत सारे हैं जी, तो कितना कुछ ट्रेनिंग जी. हमने इस फिल्म में क्राव मागा एक इजरायली सेल्फ डिफेंस फॉर्म है मार्शल आर्ट्स के, तो वो क्राव मागा मैंने सीखा इस एक्शन के लिए, क्योंकि ये एक्शन हमें बहुत रियलिस्टिकली दिखाना था. नहीं कि कोई उड़ रहा है, कोई केबल से कोई खींच रहे किसी को, क्योंकि एक तो एक औरत को एक्शन रोल में देख के ही सबका नज़रिया ऐसा होता है कि अरे यार ये क्या करेगी यार, कम ऑन यार, कैसे मुक्का मारेगी, क्या है ये, जम नहीं रहा है. तो ऑब्वियसली एक प्रेजुडिस है हम सबके माइंड में कि हम जब भी एक आदमी को लड़ते हुए देखते तो हमको लगता है कि अरे यार माइंड ब्लोइंग है, स्ट्रॉन्ग है. एक औरत वही करती है तो ऐसा लगता है कि यार उसके आर्म्स देखो, उसके रिस्ट देखो, ढीली है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है. तो हमारे दिमाग में था कि अगर हमको एक्शन सीक्वेंस दिखाना है फिल्म में तो किस तरह से हम बिलीवेबल कर सकते हैं. तो इसीलिए हमने क्राव मागा इस्तेमाल किया, क्योंकि हम कोई भी मार्शल आर्ट्स ले सकते थे या कोई भी एक्शन फॉर्मेट यूज़ कर सकते थे फिल्म में. लेकिन क्राव मागा में ये सिखाया जाता है कि आप जैसे हो, मतलब आपकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, अगर आपके सामने एक आपसे डबल ऊंचा आदमी भी अगर खड़े हो जाए तो आपको सिखाया जाता है कि आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं. अगर 50 किलो की हूँ और मेरे सामने अगर एक 80 किलो का आदमी मेरे सामने आ जाए मसल्स के साथ, तो मैं उसको कैसे टैकल कर सकती हूँ. तो ये क्राव मागा में सिखाया जाता है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस सेल्फ डिफेंस फॉर्मेट फॉर गर्ल्स. तो इसीलिए हमने ये फॉर्मेट इस्तेमाल किया ताकि जो फाइट सीक्वेंसेस है वो और बिलीवेबल लगे और ऐसा लगे कि हाँ ये लड़की ये फाइट कर सकती है. सो इट्स नॉट आउट ऑफ मतलब बाउंड्स कि ऐसे कैसे हो सकता है. वैसे तो मेरा जो किरदार है, शी इज़ अ पुलिस इंस्पेक्टर, तो पुलिस ऑफिसर्स को तो ट्रेनिंग मिलती ही है, हर मार्शल आर्ट्स मतलब वो सीखते हैं. I think they go through a session of what kind of martial arts do they do at the police academy?
They did, so they basically teach the basics of everything and they teach all kinds of a mix of the martial arts form. So हमने सोचा कि already the character is an officer, so what martial arts form can she adopt? Which also for a common person when he sees the film, it looks as if हाँ ये believable है, ये हम कर सकते हैं. दादा बहुत कम मूवी बनाते हैं, ऐसे क्या रीज़न है? बिकॉज लफेंग के परिंदे, फिर लागा चुनरी के बाद क्या रीज़न है कि ज़्यादा आप एड में एंजॉय करते हैं, मूवी कम बनाते हैं? हाँ करेक्ट. वो दाग धोना था. हाँ तो शायद धुल जाएगा, पता नहीं, लग तो रहा है सिनेमा देखकर. नहीं. देखिए आपका क्वेश्चन क्या था जरा प्लीज, इफ यू डोंट माइंड. कम मूवी बनाते हैं, क्या रीज़न है? बिकॉज अच्छा कम मूवी बना दो. नहीं Because he makes a lot of ads. नहीं कम मूवी की बात नहीं है. थोड़ा टाइम लेके करता हूँ क्योंकि मुश्किल होता है कहानी मिलना, कहानी मिल के. और ये वाला जो बहुत देर से बहुत कुछ कहानी ढूंढ रहे थे, पर ये एक इंसिडेंट्स कुछ आने लगे सामने और बहुत चीज़ सोचने लगे उस टाइम पे. when this came out, this thing came out, तो उस टाइम पे लगा कि शायद इस पे एक बनाया जाए, क्योंकि देयर इज रेफरेंस पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं है, पर वी स्टिल सी सो मेनी थिंग्स, वी आर हियरिंग सो मेनी थिंग्स. It takes time. Frankly, it takes time to come to a subject. Rani, Prerna here from Rajshri. Here, Yes. straight. Sorry, I can't hear you, sorry. Somebody else was speaking. Yeah, here, straight, just straight here. Can I? Okay, no. Okay, Hello. she has a mic. Should I answer her? Yeah. हाँ? Okay. Okay, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जी. अकॉर्डिंग टू यू क्या एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म में एक ए लिस्टर एक्टर होने से उस फिल्म की प्रोटैगनिस्ट के लिए ड्रॉबैक होता है? ये तो मैं कह नहीं पाऊंगी, बट आई थिंक वेन एवर यू हैव लाइक अ गुड कॉन्टेंट, स्टोरी जो होती है वो हमेशा ए लिस्टर स्टोरी होनी चाहिए. द कॉन्टेंट शुड बी किंग, एंड वंस द कॉन्टेंट इज किंग देन इट डजेंट मैटर कि उस फिल्म में कौन है. There are certain films which are driven by A-listers where your content is also good and you need a big star to drive it. But again, I think when your content is strong, then I think even when you have newcomers, the film can do exceptionally well. And we do have examples. Yeah, because nowadays we see women-centric films having, like, suppose if... See, I would say, I think we should, and especially I think you girls should start that. I think this whole term, when it becomes women-centric, I think this women-centric term is only a bit strange because we don't call a normal film a male-centric film. So I think we should stop calling films male-centric or women-centric. It should be a good or a bad film, So if it's a good film, I think we should say, yeah, this was a good film. And it doesn't matter whether it was male-dominated or female-dominated. And also, there are films which are love stories, which actually, if you see, they are very, very women-centric. Because you can't have a love story without the female protagonist being there. And sometimes the female protagonist in the film, in a love story, actually has a much better role than the boys. Like, I've done a lot of films like that, where I've had a hero, but the girl's role has been always stronger. If you take all the greats, like Raj Kapoor ji, Sanjay Leela Bhansali, I think all the films that they also made, they were very strong female-centric films, but they were love stories. And also when you say, you see a Yash Chopra film, most of Yash Chopra's films, if you see, the female has a very, very strong role. So we don't call those films women-centric. I think only when we are seeing a particular film where you are seeing just a female protagonist doing the title role. And of course, you don't have a very strong, say, a A-lister there. So your mindset turns to say that, oh, this is a women-centric film. But I think every film today, I think, because the way audiences are accepting films, I think it should just become like a normal way of viewing a film. Yeah, we're going for a film. It should not matter to you whether who's the protagonist, as long as the content is good. So if you're interested with seeing the promos, if you like the promos, we can only come here and promote the film to a certain extent. But the final says of the audience when they see a promo or a trailer of a film and they feel that, yaar, ye film hame dekhni chahiye. So that's all we can do. We can't force anybody to see a film. And that's what we all actors do. We go to different platforms to make people aware of our films. At the end of the day, it's the content, which is the trailer, which actually either inspires a person to go see the film or not.
रानी, जैसे हमने Yes. फिल्म के जरिए देखा कि आप आपका मर्दानी अवतार, लेकिन रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो पर्सनली आप कितनी मर्दानी है? कभी कॉलेज दादा ने तो बोला अभी। स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में कभी आपने डिफेंस किया हो खुद को किसी से? नहीं, मैं स्कूल टाइम कॉलेज में तो पता नहीं, पर जब से मैं जानता हूँ, विच इज़ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बहुत पहले ऐड किया इनके साथ, वो मर्दानी तब से ही थी। अभी नाम अभी रखा गया है, पर पहले से ही मर्दानी थी। अभी का नाम अभी स्कूल कॉलेज, हाँ स्कूल कॉलेज में इनफैक्ट इफ यू ट्राई एंड गेट टू मीट एनी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स और माई कॉलेज फ्रेंड्स, आई थिंक दे विल गिव यू टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट दैट यस आई वाज अ मर्दानी इवन देन। सो रानी, मेरा क्वेश्चन 1 minute, हाँ, जस्ट कमिंग बैक टू इन टू। जैसा कि अभी बोला गया कि करीना चाहती हैं कि वो भी आपकी तरह एक कैरेक्टर प्ले करे, तो इन फ्यूचर क्या आप कोई ऐसी फिल्म प्रोड्यूस या डायरेक्ट करेंगी जिसमें करीना को आप उनकी इच्छा के अनुसार पुलिस का रोल दे सके? Is there any other relevant question? Then I can come back to this also. हाँ. आपके मुंह में जो आपको पसंद आए. If it can touch the hearts, it will be very good, but the money is also fantastic. No, I think, see, as I told you earlier also, when the gentleman here was trying to say that, you know, are we looking at comparing ourselves with any film? We are absolutely not. We've all made the film with all our heart, like we were really, really very inspired to make this film. That's why we all got together to make a film like this. It could have been any other story, but I think this is a story that touched all our hearts. I think it's something that we all somewhere feel that it's very relevant in today's times. And it's a very small effort from our sides to actually give a film which I think that all women, when they see the film, they will feel like a Mardaani, they will feel powerful, they will feel inspired, they will feel spirited. And I feel if we can achieve even that much, that will be like really, really great for us. So if the film can touch people in the right way, if it can touch the girls, the women in the right way, I think we'll feel that this film was worth making. And it'll be worth me being part of the project. And of course, today everybody gives a lot of importance to the numbers. Obviously, the numbers are important because that verifies how successful your film is. So we all are keeping everything crossed. As you can see, my legs are crossed also. So we are keeping everything crossed so that the film does well and the film is appreciated. And everybody likes it for the true spirit that the film is. Mardaani. Rani, Abira, you're from Times now. Last question. Yeah. He has already asked the question. I would repeat the question. You have already seen Amir Khan's poster. Any other relevant question? Okay. Thank you, everyone. Any? Thanks. Yes, please. Rani, hello, Rani Kunal from India News. Rani. Watch the movie on 22nd August. Okay. So I've got an intimation from my very dear Priyanka, because she's not liking where the press conference is veering to. So she's signaled me to say, movie's releasing on 22nd of August. Please come and watch Mardaani, and hope that after seeing the promo and the songs, you'll like it. And if you'll like it and if you'll feel that there's something that you'll want to come and watch and inspire you all, please come and watch the film. Thank you very much.